So next is mixed red and black soil. Mixed red and black soil found in Madhya Pradesh, Rajasthan, southern parts of Uttar Pradesh, Chhattisgarh, North Karnataka, Andhra Pradesh, mainly because of fluvial actions. Mainly because of fluvial actions. Okay. So ये हो गए आपके alluvial soils और ये हो गए आपके red and black soil. Red and black soil. Okay. Vertical line. Sorry. ये है vertical line soil. ठीक है. हॉरिजॉन्टल वाली एल्यूवियल साइड्स. एल्यूवियल साइड देखो कितना एरिया है एक्चुअली में. ये पूरा एल्यूवियल साइड का रीजन है यहाँ आसाम में भी. सो दिस इज योर एल्यूवियल सॉइल एंड रेड एंड ब्लैक सॉइल. आज हम इंस्टीट्यूशंस कर लेते हैं. सारे इंस्टीट्यूशंस बेसिकली आज में कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है. IGCAR, नीरी, कैजरी, UCIL, एरीज, इंसरा, NIOT, NIOT, NCAOR, 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 IITM, CLRI, NIAM. ओके. सो मैं आपको पहले इन सबको मैप पे दिखा देता हूँ एक बार. मैप अपना ड्रॉ कर लेना. ठीक है. मैप ड्रॉ करके एरीज, कैजरी, NIOH, UCIL, नीरी, इंसरा, IITM, NCAOR, IGCAR. अरे ये कौन सा था? NCAOR. IGCAR, Indira Gandhi Center for Atomic Research, is located at Kalpakkam near Chennai. Engaged in the atomic research and robotics. First prototype fast breeder reactor PEFBR was constructed here. First prototype fast breeder reactor. ठीक है. तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर, तो ये एक टेक्नोलॉजी है एटॉमिक रिसर्च में. PFBR, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. तो ये कहाँ पे? IGI सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इज लोकेटेड एट कलपक्कम, चेन्नई. ओके. नेक्स्ट इज नीरी. National Environmental Engineering Research Institute is located at Nagpur. Engaged in the research in the field of environment. Okay. Next is CAZRI, 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 Central Arid Research Institute, located at Jodhpur. Okay. Engaged in the research of crops of the arid regions. Arid region basically हम किसे कहते हैं? राजस्थान के रीजन को. And it is located in Jodhpur is in Rajasthan. ठीक है. कैजरी, Central Arid Zone Research Institute. आप इसके नाम से भी पता कर सकते हो, Arid Zone Research Institute. UCIL, Uranium Corroration of India Limited, is located at Jaduguda in Jharkhand. UCIL, Uranium Corroration of India Limited. ठीक है. यूरेनियम का एनरिचमेंट बेसिकली यहाँ पे होता है. ठीक है. यूरेनियम का एनरिचमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में उसका इस्तेमाल कर सकें. तो ये कहाँ पे? जादूगुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. ठीक है. Engaged in exploration, mining and processing of uranium. Aries, Aryabhatta Research Institute of Observatory Science is located in Nainital. Okay. Pioneer Institute
Pioneer Institute for the Observatory Science. Pioneer Institute for the Observatory Science. Okay. So एक सेकंड मेरे को देना, एक सेकंड बस. कैजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर. ठीक है. नेक्स्ट इज यूसीआईएल, यूरेनियम कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इज लोकेटेड एट जादूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. ठीक है. यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है यहाँ पे. और एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन माइनिंग प्रोसेसिंग ऑफ यूरेनियम. एरीज, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटरी साइंस, is located in Nainital. Pioneer Institute for Observatory Science. Pioneer Institute for Observatory Science. ठीक है. तो यहाँ पे आर्यभट्ट का आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमी के महारथी थे इंडिया में. और इस वजह से उन्हें क्या कहते हैं, काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज करा जाता है इंडिया में. जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनमें सब में ये देखा जाता है कि ज्यादातर का नाम आर्यभट्ट से शुरू करने की कोशिश करते हैं लोग, जो भी स्पेस से रिलेटेड कुछ काम होता है, बिकॉज ही हैज डन इनक्रेडिबल वर्क इन सेक्टर ऑफ स्पेस सेक्टर. ठीक है. दुनिया ने उनसे करीबन करीब 400-500 साल बाद जाके बताया कि दैट अर्थ डजंट रिवॉल्व्स अराउंड सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन. सन अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमता है, और अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है. ठीक है. तो ये बात आर्यभट्ट ने करीबन करीब 500 साल पहले बोल दी थी, और उसके 500 साल बाद फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने और फॉरेन साइंटिस्ट ने बेसिकली इस बात को डिक्लेयर करा कि यही प्रोसेस, इसी प्रोसेस के थ्रू अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन. ठीक है. So he is considered to be the best astronomer, astronomy. I just confuse in these two words, astrology and astronomy. INSRA, Indian National Remote Sensing Agency, is located at Hyderabad. Indian National Remote Sensing Agency is located at Hyderabad, engaged mainly in the application aspect of the remote sensing. ठीक है. रिमोट सेंसिंग का एस्पेक्ट, रिमोट सेंसिंग बेसिकली हम किसके लिए करते हैं, वेव्स की सेंसेशन जनरेट करने के लिए. रिस्पांसिबल फॉर सुनामी वार्निंग के लिए इंसरा को, इंडियन नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी इज लोकेटेड हैदराबाद. तो ये इंस्टीट्यूट इंसरा सुनामी वार्निंग के लिए बनाया गया था, बिकॉज एज यू ऑल नो कि जब केरला में सुनामी आया था तो उसके लिए वार्निंग पहले से नहीं आ पाई थी. ठीक है. और बिकॉज ऑफ विच देयर वाज अ ह्यूज कैजुअलिटी अकर्ड इन केरला. ठीक है. केरला में बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है. तो सुनामी की वार्निंग के लिए फिर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करा था जस्ट आफ्टर दैट. ठीक है. NIOT, National Institute of Ocean Technology, is located at Chennai. Engaged in development and promotion of technology specific for ocean related areas. National Institute of Ocean Technology is located at Chennai. Engaged in development and promotion of technology specific for ocean related areas. Okay. तो ओशन की टेक्नोलॉजी बेसिकली हम क्या चीज देखते हैं कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो जो टाइड्स होती हैं वो कंटिन्यूअस फ्लो करती रहती हैं. आप सभी जानते हैं कि दिन में काफी बार टाइड्स आती रहती हैं. तो उनसे क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का तरीका हमने डेवलप कर लिए हैं. ठीक है. टर्बाइंस रिवॉल्व करने के भी तरीके हमने डेवलप कर लिए हैं टाइड्स के थ्रू. तो आगे आने वाले टाइम में इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का बहुत ज्यादा काम बढ़ने वाला है. ठीक है. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट चेन्नई. तो आगे आने वाले टाइम पे हम इंडिया इज इन पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौते के थ्रू इंडिया काम करती है. तो फिर हमें ये देखना होगा कि NIOT के आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा काम बढ़ने वाला है. ओके. NCAOR, National Center for Antarctic and Ocean Research, is located at Goa. Ocean Research is located at Goa. Set up in 1998. Expeditions for Antarctica and Arctic regions start from here. First institute in India completely dedicated to all aspects of polar research. ठीक है. Polar research,
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटार्क्टिक, तो NCAOR कहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप है, located at Goa, set up in 1998. Expedition for Antarctica and Arctic regions start from here. तो यहीं से ही मतलब जो NCAOR है, नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च, तो यहीं से ही हम पोलर पोलर रीजन्स में अपना मिशन जो है वो भेजें। जैसा कि आप जानते होंगे कि गंगोत्री एक हमारा एस्टेब्लिशमेंट है एंटार्क्टिक रीजन में, तो गंगोत्री है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम, एंटार्क्टिक रीजन में हम रिसर्च करने के लिए भेजते हैं। तो उसे वहां पे रिसर्च करने के लिए कहाँ से जाते हैं साइंटिस्ट, एनसीएओआर। ओके, नेक्स्ट इज आईआईटीएम। IITM, Indian Institute of Tropical Meteorology, is located at Pune. Tropical Meteorology, तो इस साल इसका काम थोड़ा सा बढ़ जाता है बिकॉज हमने क्या डिक्लेयर करा है इस साल, इन 2020 वी हैव डिक्लेयर्ड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मेट्रोलॉजी टू बी द इंडियाज मेट्रोलॉजी, ठीक है। मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK का जो एरिया है उसमें बेसिकली जो भी मेट्रोलॉजिकल डिक्लेरेशन होंगी या फिर मेट्रोलॉजिकल सर्वे होंगे तो वो इंडिया ही करेगा, ठीक है, इंडिया ही करेगा। तो IITM ने इस साल ये चीज डिक्लेयर करी है, दैट्स व्हाई दिस इंस्टीट्यूट बिकम्स इम्पोर्टेंट। Indian Institute of Tropical Meteorology is located at Pune. As you all know, Pakistan occupied Kashmir is the occupied territory of Pakistan, but not a legal territory of Pakistan. Okay, not a legal territory of Pakistan. Engaged in applied research in the monsoon meteorology of the tropics. Monsoon meteorology of tropics. Next is CLRI. Okay. Central Leather Research Institute is located at Chennai. Central Leather Research Institute is located at Chennai. Pioneer Institute in India, which is engaged in leather research. Which is engaged in leather research. ओके, सो लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक यूपी में भी कानपुर में था, बट क्या हुआ कि वो धीरे धीरे करके बिकॉज यूपी में एज यू ऑल नो देयर इज some Hindu majority, there is a Hindu majority area, and they doesn't like the smell of leather research institutes and other leather factories, so they don't like the leather research institute and all these stuff. So दैट्स व्हाई कानपुर की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था वो धीरे धीरे डिक्रीज हुआ और CLRI की इम्पोर्टेंस इंडिया में बढ़ती चलेगी बिकॉज वहां पे अभी इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज NIAM, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड एट जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ agricultural marketing is located at Jaipur. Okay, set up in 1988, set up in 1988, set up in 1988. Okay, uh, engaged in imparting training to farmers and other officials in the marketing management of agriculture. So this is all for your today's news, ठीक है। ICAR, इनकॉइंस, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स बच जाएंगे आपके। फिर नेशनल हाईवे हम कर चुके हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे हम कर चुके हैं। और फिर उसके बाद हम करते हैं नेशनल वाटरवे, हम कर चुके हैं। और फिर हम उसके बाद देखते हैं नेशनल वाटरवे भी हो चुका है हमारा, पोर्ट्स भी हो चुके हैं, ठीक है, पोर्ट्स वगैरह भी हो चुके हैं हमारे। और आगे आने वाले टाइम में बस हमारा रिवर का टॉपिक बचेगा, ठीक है। रिवर का टॉपिक मैं आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा इन फॉर अ होल क्लास, मतलब पूरी एक क्लास लूंगा उसके लिए, ठीक है। तो रिवर्स का टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक है, दैट्स व्हाई इट नीड टू बी क्लैरिफाइड, ठीक है। सो अब हम डेली द हिंदू एनालिसिस करते हैं, वो करते हैं अभी। ओके, शुभम इज out of network area. So there is one news related to solar flares today.
So we will do it. What are solar flares? What are solar flares? Okay. Twisted and unstable, desperate to spew their energy, they create a magnetic bomb primed to explode. And so if one magnetic field with stored energy sees another magnetic field. These are the solar flares of the sun. Okay. So solar flares के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. Okay. How the universe works. Huge loops of magnetic energy. These are the solar flares. Okay, these are being created by the nuclear explosions at the sun. As you all know, sun atmosphere is basically made up of hydrogen and helium. Sun atmosphere is basically made up of hydrogen and helium. Okay, so sun atmosphere के according हम सोच सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एंड हीलियम के बॉम्ब होते हैं वो किस तरीके से एक्सप्लोड कर सकते हैं. ठीक है. क्योंकि पूरा सन हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियर बॉम्ब्स कंटिन्यूअसली एक्सप्लोड हो रहे हैं, तो उनसे क्या क्या चीजें जनरेट हो सकती हैं. ठीक है. Mark out over the sunspots. Twisted and unstable, desperate to spew their energy, they create a magnetic bomb primed to explode. And so if one magnetic field with stored energy sees another magnetic field, those two look at each other and say, hey, if we connect, we get rid of a lot of energy. They do so. They reconnect. Wow. Of energy. We have basic solar flares and what are its consequences. ये भी मैं आपको वीडियो के थ्रू ही समझाऊंगा. What are its consequences? मतलब अभी हमने solar flares observe करे हैं, तो because sun has come the closest. ठीक है, तो sun closest आया और हमने solar flares को observe कर रहे हैं. ठीक है, from the earth we are observing the solar flares and we are seeing the solar flares. Today it is in the Hindu newspaper. So that's why I am explaining you this important topic of geography, and I will also explain this topic in geography topics also. Okay. Mass ejection, or CME. In 2012, a powerful CME shot through the Earth's orbit. Luckily, we missed a direct hit. We weren't so lucky back in 1859 when the... So what are these called? CME. Okay. So these are basically called. ये what if की वीडियो है, बहुत fantastic वीडियो बनाते हैं. Okay. Meters away. And what could you do if that happened tomorrow? This is what if. And here's what would happen if a massive solar storm hit the Earth. It wouldn't be the solar flares that sent us back into the pre-technological era. It'd be the giant clouds of hot plasma and electromagnetic radiation that the sun spews out. This is a phenomenon known as a coronal mass ejection, or CME. In 2012, a powerful CME shot through... So you can observe this CME. Okay. This is the way it has gone. Okay. This is the way it has gone throughout in 2012. So it is likely to occur again. If it happens, then your internet connection and the whole Earth can become a blank just by some solar flares. Just magnetic field of sun can make the whole internet destroy. Okay. So एक तो कोरोना हो रहा है और ऊपर से सन का ये सोलर फ्लेयर्स आता करता है. ठीक है, इंटरनेट और बंद हो जाएगा. The Earth's orbit. Luckily, we missed a direct hit. We weren't so lucky back in 1859 when the electromagnetic radiation of another CME set telegraph pylons on fire.
The telegraph. That's really all there was for technology at the time. But now, our entire planet is deeply reliant on electricity and electronics. If a solar storm that strong were to strike today, we'd be in a much worse situation. It would start with an enormous explosion on the sun's surface. The solar flare would zap the Earth's upper atmosphere with a giant electromagnetic pulse. This would block radio signals between the Earth and our orbiting satellites, but it wouldn't damage them just yet. Not until minutes to hours later, when a stream of charged particles started bombarding the Earth's magnetosphere. These particles would hit some of the satellites and damage their electronics. Our communication systems would begin failing. But the worst is yet to come. After anywhere from 12 hours to several days, a cloud of plasma would finally reach the Earth. First, it would hit NASA's ACE satellite, designed to warn us about the upcoming storm. Even with that warning, we'd only have about 30 minutes before that space cloud rained down on our magnetosphere and triggered a geomagnetic storm here on Earth. Hopefully, you're not in an airplane at the time, because its GPS system would fail, and your pilot would have to start navigating without it. On Earth, the geomagnetic storm would start to melt our power grid transformers. Do you know what that means? A global power outage. Not much fun for all us power-hungry humans down here. All the lights would go out. You wouldn't be able to charge your phone or your laptop. Your fridge would stop refrigerating, and your heater would stop heating you up. Make sure you have some spare cash, because all the ATMs would be useless, just like your credit cards. Most likely, you wouldn't even be able to flush your toilet, since in most modern cities, water supply is controlled electronically. Anything and everything relying on the internet would shut down. No banking services, no internet access in the transportation system, and no social media to vent your frustration in. We can't control the space weather. If the sun were to send us a direct hit, this hypothetical scenario would get real. Almost real. NASA and the Space Weather Prediction Center keep monitoring the activity of our sun. Their 3-day forecast would give us a heads up if our star looked suspicious. We might have time to disconnect our transformers and switch the satellites into safe mode. Maybe one day, we'll build a protective shield around the Earth to prevent something like this from affecting us. But that's a story for another What If. So these are the consequences, because we are seeing that solar flares are basically coming to Earth. Okay, so it is in today's the Indian newspaper that solar flares are might affect the Earth. Okay, so next the time is about to over, so we will start the next class. Okay.